आज हम क्लास 8th की एक पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले लिटरेरी डिवाइसेस सीखेंगे बिकॉज लिटरेरी डिवाइसेस आर कंसिडर्ड ornaments of a poetry. They adore a poem and makes it very easy for its readers to comprehend it. सबसे पहले थीम इसका समझते हैं। ए नेशन स्ट्रेंथ जो पोएम है ये यूवन में आती है। थीम इसका है द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन डज नॉट लाई इन द वेल्थ पावर एंड प्राइड बट इट लाइज इन इट्स पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइनेड मैन। कि कौम का जो ताकत होता है, ये ताकत, इसकी दौलत, इसके मिलिट्री फोर्स या बाकी जो वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं इसमें नहीं होते हैं, बल्कि इसके उन आदमियों में होती है जो कि हुब्बुल वतन रखते हैं, यानी अपने वतन के लिए प्यार मोहब्बत रखते हैं। ये इसका थीम है। और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें बहुत सारे यूज़ हुए हैं। सबसे पहले एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट सबसे पहले यूज़ हुआ है थ्रू आउट द पोएम। एंजॉयमेंट मीन्स सिंपली इट्स द फ्लो ऑफ एन आइडिया विद इन ए कपल ऑफ लाइन्स और इवन ए स्टेंजा। एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि जब शायर कोई बात कहना चाहता है, हम वो बात नहीं समझते हैं तब तक जब तक हम वो लाइन्स कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं या वो स्टेंजा नहीं पढ़ते हैं। समटाइम्स द होल पोएम मीन्स when we don't get the message or the idea of a poet or a poetess until we read the whole stanza or a couple of lines or sometimes even the whole poem। जब हमें कोई बात पूरी समझ नहीं आती है तब तक, जब तक हम वो स्टेंजा पूरा ना पढ़े या वो पोएम पूरी ना पढ़े तब तक वो बात जहन में नहीं आती है। दैट्स कॉल्ड एंजॉयमेंट। एंड एंजॉयमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम फ्रॉम बिगनिंग टिल टू इट्स एंड। आप देखें, पहला स्टेंजा जो है उसमें कहता है व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर्स हाई। दूसरी लाइन इसी के साथ जुड़ी है एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रांग। बोथ सेंटेंसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर वन अनदर। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है बिकॉज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड हैज़ बीन पुट बिटवीन देम। तो इसी तरह से सारी लाइन्स में आप देखोगे यू विल नॉट गेट द आइडिया, यू विल नॉट गेट द पॉइंट until you read the second poem, until you read the second line of the stanza। कि आपको तब तक वो आइडिया पूरा समझ नहीं आता है जब तक आप दूसरी लाइन नहीं पढ़ते हो। तो दैट्स कॉल्ड एंजॉयमेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस इज रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन वो सवाल होता है द ऑथर और द राइटर ऑफ द पोएम, पोइट और द पोइटेस ऑफ द पोएम knows the answer of the questions himself, herself, but he or she asks questions not for the sake of the answer, but in order to create a special emphasis, but in order to put more emphasis on it, he or she asks questions. For example, there are questions: is it sword? Second one is it pride? After going through the poem, we know that neither it is sword nor pride which can be considered two powerful weapons for becoming a mighty nation. No, answers are obvious. Everyone know that it is neither sword nor pride which can be considered the powerful weapons of a nation। तो ये शायर जानता है इन सवालों का जवाब, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए स्पेशल एम्फेसिस वो रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है। थर्ड वन इज इन्वर्जन और हाइपरबेटन। इन्वर्जन मीन्स when the poet deliberately makes an incorrect order of the words in a sentence, यानी रिवर्स, इट हैज़ बीन derived from रिवर्स, वो रिवर्स सेंटेंस लिखता है आल्सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेशल एम्फेसिस और इम्पॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने स्टेंजा में दिया है men who for truth and honor sake stand fast
एंड सफर लॉन्ग। लास्ट पेज नंबर 49 पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेंजा है। फिफ्थ स्टेंजा, men last two lines, men who for truth and honor sake stand fast and suffer long। करेक्ट ऑर्डर इस सेंटेंस का है men who stand fast and suffer long for truth and honor sake। सेकंड लाइन है यहाँ पे, the foes that around it throng, the foes that around it throng। एग्जैक्ट या यू कैन से करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस है द फोज दैट थ्रॉन्ग अराउंड इट। उसके बाद राइम स्कीम है, राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड हियर, अल्टरनेटिव राइम स्कीम। अल्टरनेटिव राइम स्कीम का मतलब ये है व्हेन द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन resembles with the last word of the third line and the last word of the second line resembles with the last word of the fourth line, that's called alternate rhyme scheme। अल्टरनेट राइम स्कीम का मतलब ये है कि जब पहली लाइन का लास्ट वर्ड तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मिले, आवाज़ उनकी मिले, और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से मिले, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव राइम स्कीम। सिम्बॉलिज्म का यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा पोएम में। सिम्बॉलिज्म simply means or symbolism simply means it shows one thing in terms of another। ये होता कुछ और है लेकिन दिखाता कुछ और है। मान लीजिए यहाँ पे पोइट ने sword की बात की है, तलवार, sword symbolizes violence, bloodshed, power, strength, leadership, courage, battle। bright crown symbolize करता है pride and prejudice of a king। shaft symbolizes foundations of a nation। the sinking sand is directly used here as metaphor, sinking sand, in which the poet has compared strength and power to the sand। Gold represents wealth. And lastly, the poet has used repetition। Repetition simply means when there is, when there occurs a word or a phrase a number of times, more than 2 times in the whole poem, it's called a repetition। A number of the words have been repeated in this poem, and the repetition or the repeated use of the same word two or more than 2 times is called a repetition। Thank you।